गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम एवरीबॉडी। आज सभी को वेलकम। आज एक स्पेशल डायलॉग सेशन, आवर इंटरनेशनल गेस्ट मिस्टर JR फ्रॉम मलेशिया। सो आज आप सभी को ये स्पेशल जो आज प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। आज एक हिस्टोरिकल डे है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे आप सब है, हम सभी का अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम है। हम जिंदगी में कुछ चीज हासिल करना चाहते, कुछ पहुंचना चाहते। बहुत सारे लोग ये क्लिनिक में जुड़ने का बाद लोग सोचते मेरा ये ड्रीम पूरा होगा क्या, मेरा एक ड्रीम पूरा बिग है, हो सकता है ये बिग ड्रीम नहीं पूरा होगा, मेरा ये ड्रीम तो लग रहा है और भी बिग है, नहीं पूरा होगा। इस तरह की बहुत सारे डाउट होता है, बहुत सारे कॉन्फ्यूजन होता है। बट आज हम लोगों के सामने ऐसा एक शख्सियत आज आएंगे। आज ये वेबिनार में इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे इस प्रोग्राम में, उनके बारे में हम लोग बताएंगे। उनका लाइफ में कहां से कहां पहुंचा, कितना बिग ड्रीम आप सोच सकते, कितना बिग ड्रीम आप सोच सकते, सारे ड्रीम ये कैलिंग से पूरा हो सकता है। यस डियर फ्रेंड, आपका कुछ भी ड्रीम हो, ये कैलिंग ये ड्रीम फुलफिल करने में आपको हेल्प कर सकता है। सो आज पहले हम लोग प्रोग्राम शुरू करने का पहले हम लोग उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे, जहां से उनके बारे में हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कौन आ रहा है आज का प्रोग्राम में। देन डेफिनेटली मैं उनके बारे में और कुछ बताऊंगा। सो प्लीज उनका एक वीडियो। हम लोगों ने देखा उनका इंटरनेशनल ट्रिप, राइट, इंटरनेशनल वियतनाम, कंबोडिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री। हम लोग सोचते अपने एरिया में बिजनेस बनाएंगे, अपने एरिया से बाहर थोड़ा बिजनेस बनाएंगे, तो दूसरे स्टेट में बिजनेस बनाएंगे, लेकिन हमेशा उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ओपन किया और उस कंट्री को डेवलप किया। ऐसे एक ग्रेट लीडर आज हम लोग के पास आ रहा है। वो ग्रेट लीडर का एक्सपीरियंस से आज हम लोग का जो ड्रीम है, उस ड्रीम के रास्ते को और भी क्लियर करेंगे, कैसे कौन सी बेबी स्टेप लेके हम लोग सारे अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर JR फ्रॉम मलेशिया। वेलकम सर। Hello, yeah. Hello, thank you, Dr.Pranav. Welcome to India virtually, sir. Okay, can you hear me clearly? Yes, I can hear you. Okay, yeah. Thank you so much for inviting me. Yeah, I would like to thanks to Mr. Jaga, Mr. Jaga, my consider like brother to me. So he's the one who invited me. I think, he's a country head of India. And then, thank you. I've been communicating with Dr. Pranav. Yes. Do I pronounce right? Because sometimes pronouncing name, I'm a bit worried. Okay. So yeah, and to all our viewers, participants, especially all my brother and sister from India, how are you doing today? Okay. I hope everybody shout. Great. Okay. So I would like to thank also because I couldn't see the participant, but I know there's some participant from Philippines, from Hong Kong, and then I don't know, because when they see the link and my poster, so everyone start posting maybe to Taiwan, Indonesia, I don't know. So hopefully today, this is a dialogue session. So I want everyone to feel relaxed
Okay. So do you need to translate? Yeah, to yeah, them, yeah, right? Yes, sir. Yes, Okay. sir. I need to translate. ओके सर ने जो बोला सर आप सभी को भाईचारा बटा और सर ने बोला सभी को वेलकम और बहुत सारे उनका पोस्टर देखने के बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी आज पार्टिसिपेंट है इस प्रोग्राम में सो ये रियली एक इंटरनेशनल प्रोग्राम हो गया है और उन्होंने थैंक्स दिया हम लोग को ऑनरेबल डायरेक्टर सर को और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे और सर के साथ साथ मैं भी थोड़ा ट्रांसलेट भी करूंगा बट उनका कॉन्सेप्ट शेयर करने का बात करेंगे तो रियली बहुत अच्छा रहेगा Okay, welcome, sir. Okay. So, yeah. Well, today I feel honored. I feel honored, to be invited into this program. मैं आज बहुत सम्मानित फील कर रहा हूँ मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाया गया. So, you see, the world is so small now. The big world we can make it small where आज बहुत बढ़िया दुनिया छोटा हो गया है. So this is good. So this is what Keling is all about. Okay. So we are all in a family. So today, even though it's during the lockdown, the pandemic, so we can still see each other through Zoom. So this is what we call technology today. So and then do you need to translate? Yes. So ये आज दुनिया बहुत छोटा हो गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी. आज देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक सब हर कोई एक साथ मिल पा रहा है ड्यू टेक्नोलॉजी और ये कोविड का टाइम ये सब पॉसिबल. Okay, so business today also we are entering into the new era. Okay, so those were the days during 30-40 years ago. MLM, people are talking about MLM is door to door. So you want to do business, you get to carry your product, go and knock the door. But today, you just play your phone and you make money. So you can sell through the phone. Okay. So this is what technology. So we got to move forward, move ahead every day. तो आज ये दौर में हम लोग क्या हो रहा है पहले हम लोगों का घर में प्रोडक्ट को लेके जाना पड़ता था बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन से हम लोग खेल सकते हैं घर में बैठ के हम लोग ये बिजनेस को बना सकते हैं. Okay, so since today we are in a dialogue session, so I know, Doc, you have some question. Yes, sir. So let's begin. Today's session is only 1 hour, so for me 1 hour is too short, but it's okay. I try to cut it short and then straight to the point. Okay. If you allow me to talk, I can talk for 3-4 hours because I enjoy talking and telling story. Okay, can we go to the first question? Yes, sir. Sir, our first question is that you are a superstar of Keling International, right? So we have a myth that those who are superstar, their life is very smooth. There, everything is right time, right moment, everything is happened. But we want to know how you have started your journey with Keling. How do I get started in Keling? Okay. Back in 2001, okay, that was 13th of June, June 13, 2001. I was visited by a friend, and then he is staying about 500 kilometers away, 500 kilometers away from my house. Okay, so he called me and we set an appointment. He come to my place and then just trying to show me the product, not to talk about business, but to show a wonderful product. So I accept his proposal. So he come and visit me. So 2001 में जून में मेरा एक दोस्त आया था मेरा 500 किलोमीटर दूर से तो उन्होंने मेरे साथ मीट किया कुछ प्रोडक्ट लेके. So after looking at the product, so he gave me sample. Okay, that was a Kino Takara. Okay. उन्होंने मेरे साथ मीट करने के बाद किनो तकारा सैंपल के तौर से मेरे को दिया था. Yeah, so that's all. So and then
well, because he come from far, so yeah, just to oblige, because nothing so much about understanding the business as a friendship. So I sign up. Okay, at that time, उन्होंने yeah, 500 किलोमीटर दूर से आया था, इसलिए मैंने उनके साइन अप कर दिया था. बिजनेस उतना समझ में नहीं आया था. so I got 4 pieces of sample, okay, for me to use for 2 nights, and then yeah, upon signing up, I pay 50 ringgit. So now I'm already a registered killing member. तो मेरे को 4 सैंपल मिला था, उनमें से 2 यूज किया था और 50 रिंगिट ज्वाइनिंग के तौर से मैंने दिया था. So after trying the product, the next morning, okay, I feel so amazed of the result that I see, okay, because I see the dirty kinotakara, okay, the 2 pieces that I wear, and then I call yeah, my friend, so was my upline. So, hey, what is this? Please explain to me, because last night when I wear, it was white, but today it was black. Okay, so he explained to me after that. Okay, so next day मैंने देखा 2 पैर में किनोताकारा, उसमें जो चेंज देखा, तो मैंने मेरा अपलाइन को कॉल किया, मेरा फ्रेंड को कॉल किया, व्हाट इज दिस, एंड ही एक्सप्लेन. उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया. So after the long explanation, I was looking, okay, it takes me hours and hours thinking about this product, okay. So, and I was telling myself, if it going to happen, okay, this is the product that is going to make me into a millionaire. So that is the moment that I make decision that I have to change, because that time I'm not doing so good, because yeah, during the economic recession at that time, yeah, I'm suffering. So I don't have much money at that time. Okay, money is not enough for me all the time. So that is the moment that I make a strong and a good decision to go all out in killing. So उन्होंने जब मेरे को एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने उस टाइम मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन भी उसका अच्छा नहीं जा रहा था, रिसेशन चल रहा था, तो उस टाइम मेरा पास उतना अच्छा फाइनेंशियल अच्छा कंडीशन नहीं था, तो मैंने उस टाइम एक गुड डिसीजन लिया था, मैं किलिंग के साथ जर्नी स्टार्ट करूंगा. So when I start calling here and there, visiting friend, relative, all that, and then I work very hard. And then the next product that was introduced to me actually is already in killing, but I doesn't know much, because when I work on one product, I will go all out on it. Then I was introduced another super product that is a chlorophyll. Okay, actually at that time my health is not good. Okay, I'm having a sinusitis. Okay, every day after taking shower, I will start sneezing and have a running nose, and then flu all the time. My nose is always wet, so I always carry 3 or 4 handkerchiefs in my pocket. So, and most of the time the handkerchief is wet because my nose, I keep blowing my nose. So that is how my health is. Okay, and then after drinking chlorophyll, after a week, my running nose stopped. My nose become dry, and wow, I said, I found another super product that I can push hard. So that is how, yeah. So now I got 2 products, so you can translate, yeah. Okay. So initially शुरुआत में मैंने किया तो बहुत हार्ड वर्क किया था, मेरा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास जा रहा था, एंड उस टाइम मेरा हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं था. उसके बाद उन्होंने मेरे को सेकंड एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में मेरे को इंट्रोड्यूस किया, जो है क्लोरोफिल. और उस टाइम मेरा साइनसाइटिस भी था और मेरा रनिंग नोज
था, इसलिए 2-3 रुमाल मेरे साथ रखना पड़ता था क्योंकि इतना पानी गिरता था, उसलिए मेरे को रखना पड़ता था। तो क्लोरोफिल पीने के बाद विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज मेरे बहुत अच्छा ड्राई हो गया, बहुत अच्छा मेरे को फायदा मिला। देन मैंने चलना चालू किया। Okay, so with these two products, I run here and there, not run, I drive here and there to meet friends, relatives, and then I keep on talking about these two products. So in June, because when I joined up, it's already 13th of June, okay? So I got around 18 days, 18 days to do the business in the month of June. So I managed to achieve a 6%. So I become a 6% in the month of June. So next month I received the first bonus, okay? That was 214 ringgit, 214 Malaysian ringgit. That is equivalent around $51, $51 USD. Okay, so, and I was so excited, that's my first bonus, $51 USD, 214 ringgit. So that is the beginning. And so मेरे प्रोडक्ट मिलने के बाद मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। उस टाइम फ्रेंड्स के पास गया, रिलेटिव्स के पास गया, और उस टाइम जस्ट 18 डेज था मेरे लिए उस मंथ के लिए, और उस मंथ मैंने क्लोज किया तो मेरे 6% सुपरवाइजर रैंक में था। तो उस मंथ मेरा वाउचर था 214 रिंगेट, मींस 51 मलेशिया यूएस डॉलर। तो मैं बहुत एक्साइटेड था मेरा वो फर्स्ट मंथ का वाउचर लेके। And well, after the first bonus, so I'm not stopping anymore. I'm keep on pressing harder and harder and harder. So on the second month, that is July, I become a Ruby manager in the month of July. I mean, on the second month, I become a Ruby manager. Great sir. So मैंने वो प्रोडक्ट को लेके उस टाइम मैंने पहला मंथ का चेक मिलने के बाद मैंने स्टॉप नहीं किया। उस टाइम और भी मेहनत किया। सेकंड मंथ में मैंने रूबी मैनेजर हो गया। Okay. मैंने रूबी मैनेजर अचीव किया जुलाई मंथ में। Yeah, and then I keep on pressing until on the third month. Well, I spent 18 nights sleeping in the car because my activity is always on the run. Okay, so on the third month, I achieved Emerald Manager. Great. On the third month, I achieved Emerald Manager, or on that month, 18 days. 18 days मैंने कार में सोया था। Yes, कार में सोया था और बहुत मेहनत किया था, और थर्ड मंथ में मैंने एमरल्ड मैनेजर अचीव किया था। Okay, so when I was a Emerald manager, so after 6 months in Keling, so in the year 2002, Keling opened up a branch in Indonesia. So as an Emerald manager, so I buy me a plane ticket and fly to Indonesia to start my first international sponsoring. Okay, so that's how, yeah, because I have big dream, and I challenge myself. So even though I'm an Emerald manager at that time, yeah, bonus not much, yeah, a few thousand ringgit, but I manage my money, so half of my bonus just to buy a plane ticket and fly to Indonesia, stay in a very cheap hotel, but I go and drink orange juice in a 5-star hotel just to find prospect. So that is how I do. Okay, you can translate that. So after 6 months, 2002, केलिंग इंटरनेशनल इंडोनेशिया में नया ब्रांच ओपन किया, और उस टाइम में एमरल्ड मैनेजर हूँ। मेरा अर्निंग 2000 रिंगेट है। मैं उनमें से हाफ मनी मैंने इन्वेस्ट किया फ्लाइट टिकट खरीदने में, क्योंकि मेरे पास बहुत बिग ड्रीम था, मेरे को बहुत कुछ अचीव करना था। तो मैंने इंडोनेशिया एक इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग के लिए चला गया, और जाने के बाद वहां पे बहुत स्मॉल होटल में मैं रहता था, बट प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए कुछ 5 स्टार होटल में जाते थे, जूस पीते थे।
So that is to cut the story short, how I meet Santoso. That, but yeah, if I tell too long story, yeah, because we don't enough. Okay, to cut the story short, there is where I met Santoso. Okay, so everybody know in the world of Keling, so everybody know the 5-star superstar. It's not me, it's my downline. So and I promise Santoso that I will come every month to help him build his group throughout 2002. So so that is how. So I only sponsor 1% in Indonesia. So that means I open up and I work. This is part of the strategy. Every leader has strategy. Every strategy that is workable. So that is a good strategy. Not to say my strategy is the best. So everybody can use their own. And as when it works, that is good. If it doesn't work, change, adjust, change, adjust. So I only sponsor 1%. I don't sponsor anybody else. But I really spend time the whole year of 2002 to build this one group until it become big as today. Okay, so you can explain. आप सभी जानते हैं मिस्टर संतोषो को, इंटरनेशनली फेमस पर्सन है। तो संतोषो, मैंने इसी तरह संतोषो को ढूंढ पाया। देन उसके बाद मैं एक ही रिक्रूटमेंट किया। हर लीडर का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, हर स्ट्रेटेजी अच्छा है। जो स्ट्रेटेजी काम करता है वही अच्छा होता है, जो काम नहीं करता है तो स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ता है। तो मैं संतोषो के साथ काम किया एंड उनको वादा किया एवरी मंथ मैं इंडोनेशिया आऊंगा, उनको बिल्ड करने में हेल्प करूंगा। देन इस तरह मैंने काम चालू किया। Okay, so that is how some tips, the sharing, how I do it during the early years of my my Keling business. Okay, so and then after 2002, so in 2003, where I tell Santoso I will come every 3 months to service his group, okay, to help him service. By that time, he also is already independent. But sometimes the bonding of the upline and downline, that is very important, okay? So even though most of the things he can do himself, even he can do better than me, but the caringness, okay, between the upline and downline, or we call it between partners in business, is very important, yeah, in MLM. If you want to success in MLM, so you got to have a good bonding, communication every now and then. If you cannot call, you just text and say at least a hello. So that is very important. That is one of the key that you have to do if you want to become successful in Keling or in MLM business. Okay, so इस तरह मैंने संतोषो के साथ मीट किया। देन एवरी 3 मंथ इंटरवल मैंने संतोषो के पास जाते थे। सो उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था। इस तरह मैं स्मॉल टिप्स आपको देते रहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो हो सकता है बहुत टाइम आप मीट नहीं कर पाते, बट रिलेशन आपको बरकरार रखना बहुत जरूरत है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, MLM बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। Okay, so in 2003, when my mission is done in Indonesia, well, I start setting another goal. So I have a bigger dream. Okay, so that's why don't worry. Yeah, just an advice to, before I forget, to the leader. Maybe, yeah, when you join Keling, you feel you are so small. You even scared to have big dream. Okay, never mind. If you have small dream, it's okay. You have small dream, try to achieve your small dream. Sometimes little dream make big dream come true. So I believe that. So before, my dream was so small because I'm very poor. So I don't know how to dream big. But now, so I already start
believing in my dream. Okay, so now I start to have a global dream. So sometime during that time, I was saying to myself, hey, maybe this dream is a bit weird, a bit weird, a bit funny, but it's okay. It's a dream. It's your dream. Okay. So and then I start to dream big, and I'm telling myself, okay, if I have the ability to build an empire, why must I control myself just by building a group? You see? So instead of building group, so now I'm thinking of building empire. So because, yeah, I like to read books about all those great fighters, Shi Huangdi, Genghis Khan, all that. I was inspired by these people, no? The Mongolian, the Great Wall. No? So yeah, so I read how they conquer, but I don't use the sword. So now we use text and phone, we conquer the world. So that is technology today, So in 2003, I started to enter Thailand because it's a neighboring country. So I think you can explain that because about the dream and yeah. 2003 अभी 2003 आ गया तो मैंने सोचा मेरा प्रोजेक्ट के बारे में सो मैंने उस टाइम एक बिग ड्रीम मैंने देखा मैं एम्पायर क्रिएट करना चाहता था छोटा छोटा ग्रुप के छोड़ के मैंने बिग एम्पायर क्रिएट करने का मेरा फर्स्ट ड्रीम था देखिए मैं भी एक गरीब था इनिशियली सो मेरे पास भी बिग ड्रीम मेरे भी कभी कभी सोचता था ये बिग ड्रीम होगा क्या नहीं बट मैं आपको बोलूंगा हो सकता है आपके पास इनिशियली बिग ड्रीम नहीं है आपके पास स्मॉल ड्रीम है बट आप वो स्मॉल ड्रीम अचीव करते करते एक टाइम बिग ड्रीम भी आप अचीव कर सकते हैं सो मैंने वो बिग ड्रीम देखा और उस हिसाब से काम करना चालू किया So but yeah, to cut the story short, when my group start expanding in Thailand, so the country is not at peace. Okay, so there's a terrorist war in the southern of Thailand. So that is where my group is. So because my group is mostly southern of Thailand, and then my leader in Thailand just called me. He said, "Upline, please, now it's not safe for you to come to Thailand. So there's a war going on in the southern of Thailand. So in fact, they themselves cannot focus on doing the business. They are focusing on staying alive. So they don't want anything to happen to me. So they say for the time being, so just hold on first." So that means, well, now my mission I got to put on hold, but I don't waste time waiting. I don't wait for things to get better. So I just use the time to divert my mission into Philippines. So that is where I start opening in Philippines when Thailand is not safe for me to go. So yeah. When थाईलैंड में मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ उस टाइम थाईलैंड का सिचुएशन अच्छा नहीं था उस टाइम वॉर चल रहा था मेरा बिजनेस साउदर्न पार्ट में था वहीं पे वॉर चल रहा था तो मेरा टीम मेंबर बोला ऑफलाइन इधर आने का जरूरत नहीं अभी सेफ नहीं है आपके लिए तो देन मैंने उस टाइम सोचा इस सिचुएशन में मैं चुप नहीं रह सकता तो मैंने मेरा बिजनेस को फिलीपींस की तरफ लेके गया फिलीपींस में स्टार्ट किया Okay, so there goes. So I'm already busy going to Philippines. So I keep on going. Every month I spend 3 weeks in Philippines and 1 week in Malaysia. So that is how my commitment and my determination. Because yeah, if you want to start something, so you got to really go all out because it doesn't happen by itself. So I make myself responsible to fulfill my promise to my leader,
And then, yeah, I keep on until when I come back to Malaysia, it's just like coming back on vacation, because I spent only 1 week vacation in Malaysia. Then my job is in Philippines. That is why I leave it Malaysia for my downline to handle. So I still communicate with them, but I say I cannot give my time going with them. Okay, so that is how I put my commitment with my leader. So I keep on going and back in the Philippines, and until now, I still Philippines doesn't grow as good as Indonesia, but I still never leave them. This is the 12 years already I'm been going, but I don't go so often already now. But since the COVID time, so I cannot go at all. But the leader there, because I have a few crown ambassador there who can take care. Okay, so okay, you just translate it. Yeah. मैं जब फिलीपींस में स्टार्ट किया था, मैं बहुत कमिटेड था और मैं मेरा बिजनेस के लिए, मेरा टीम मेंबर के लिए बहुत रिस्पांसिबल था. इसलिए एवरी मंथ 3 वीक में फिलीपींस में रहता था और 1 वीक में मलेशिया में. और मलेशिया मेरा लीडर लोग थे, उन लोगों का साथ में उतना टाइम नहीं दे पाता, बट दे आर कमिटेड थे, उनके साथ मैं मैनेज कर लेता था. तो इस तरह मैं मेरा बिजनेस बिल्ड करता था. सो आज मेरा फिलीपींस का बिजनेस 12 इयर्स हो गया. वहाँ पे फिर क्राउन एम्बेसडर है. आज मैं रेगुलरली उधर नहीं जाता हूँ, तो उधर फिर क्राउन एम्बेसडर जो बिजनेस को मैनेज करता है. Okay. Yeah, not so much, because we have several points. I think I have talked about the question number 1 and question number 2. I sum up just now. Okay, so now maybe we can go for the question number 3. So you just repeat, say again the question number 3. Yes, sir. Everybody know. Question is that you have started very good, and your achievement also extraordinary achievement, as you know. And so next question is that during this COVID pandemic time, all the businessmen are facing challenges. So how you manage your business? How you grow your business during this lockdown, during this pandemic? What are the steps you have taken? Yeah. Okay. Thank you. In fact, this is the most important question. So, and then this question need a very good answer, so that how we are going to go through. Okay. So because we already almost 1.5 years experiencing this lockdown, COVID-19, and we doesn't know when it's going to end. If we want to wait, we don't know. Those who have black hair, maybe they will turn gray. Maybe your mustache also. You want to wait until the COVID finish. I think, Doc, your mustache also will become gray, become white. No? So we cannot wait for the situation to get right. So we have to adapt ourselves. Okay. So we got to know how to adapt with the situation. That is very, very important. So whatever it is, have a positive mindset first. So before I go further, so you just translate that. Have a positive mindset. So towards the COVID-19. Yes, situation हमेशा आपका फेवर में नहीं भी हो सकता है, बट सिचुएशन को हिसाब से आप खुद को एडप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे. इसके लिए जो पहला जो चीज चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट. हम लोगों को बहुत सकारात्मक माइंडसेट हम लोगों को बहुत जरूरत है, मानसिकता बहुत जरूरत है. Okay, so how to set? Okay, for me, this is nothing. Whether lockdown or COVID-19, only thing we have to follow the SOP. So for killing business, there is nothing changes. For me, it's nothing changes. I treat it just like any other day, any other month, like not during
during before the pandemic, before the COVID-19. So I can go to the stockist and purchase the product. I can eat the product, whatever product that I'm eating, I'm still consuming. Okay, so the same goes to your customer. So those customer who are using the product, make sure you make the same call and you deliver. You cannot drive to their house. You can post it to their house. Courier service is going on, doesn't lock down. Postman is going around sending letter and sending packages. So what's so difficult? What's wrong with the lockdown? Nothing. मेरे लिए लॉकडाउन कोई अलग चीज नहीं है। मैं भी लॉकडाउन में भी जो प्रोडक्ट लॉकडाउन के पहले यूज करता था वही यूज कर सकता हूँ। जो जैसे स्टॉकिस्ट के पास जाके प्रोडक्ट ले सकता था वैसे ही ले सकता हूँ। और आपके कस्टमर के लिए, जो कस्टमर के लिए होता है, कस्टमर के पास आप जाके ड्राइव करके प्रोडक्ट नहीं दे सकते, बट पोस्ट कर सकते, कुरियर कर सकते, कुरियर और पोस्ट से आपका कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच सकता है। So I don't feel anything that can stop me from doing whatever am I doing. So that is why I call to all my members. There's nothing wrong. Don't listen too much on the news. You see people, if you see too much on the news, they are burying people. They're showing dead people. That is negative. Take care of yourself. We have a good product. Eat it for your immune system. Protect your family. That's all. Leave the country to the politician. That's not our job. Okay? It's not our job to rule the country. It's our job as a leader to take care of our people, our downline. Make sure the bonus, whatever the bonuses that they got before the COVID-19, still the same, or you can make it more. I tell you, okay. So this is the right time. This is the right time to make a move. Never mind, you translate first. Okay. So ये कोविड के टाइम मेरे पास कोई अलग नहीं था, तो मैंने क्या किया, मेरा टीम मेंबर को बुलाया, उनके साथ बात किया। एक्चुअली जो लोग न्यूज़पेपर और मीडिया देखते थे, उन लोगों को प्रॉब्लम है, उन लोगों का थोड़ा नेगेटिव माइंड हो गया, पर जो लोग पॉजिटिव माइंड में रहना चाहते उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंट्री को चलाने के लिए हम लोग पॉलिटिशियन को छोड़ देते हैं, हम लोग का बिजनेस को चलाएंगे, और उसके लिए कुछ पॉजिटिव माइंड सेटिंग चाहिए। और इस बिजनेस में, इस लॉकडाउन में भी जो टीम मेंबर है उन लोगों का चेक अच्छा मिला, पहले जैसे ही मिला, और कुछ लोग ग्रो भी किया। तो मैं कुछ चीज आपको बताऊंगा अभी। Okay, I tell you, I don't know how to express myself. I am very excited during the lockdown rather than before the lockdown. You see? मैं बहुत ही एक्साइटेड था ये लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन के पहले से ज्यादा एक्साइटेड था मैं। Because why? Because the news is giving me all the input. People lost their job. People lost their income. Okay? So there's a great opportunity in killing. So, इस टाइम न्यूज़ मेरे को इनपुट दे रहा था, क्योंकि लोगों का जॉब लॉस हो रहा था, और लोग हेल्थ के बारे में सोच रहा था। ये केलिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था। So this is the time for you to call all your friends, your family member, become your lifeline. Hey, come on, brother, you know anybody who have lost their job? Give their name and phone number to me. So those who are looking for income, those who lost their job, don't have income, come on, I have something for them. Give their name to me. So you use your lifeline. So you call people. So this time you give names. So this time आप आपका लाइफलाइन, आपका फ्रेंड रिलेटिव को आप कॉल कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं आपका कोई जान पहचान में है जिसको जॉब लॉस हो गया, जो कुछ अर्न करना चाहते हैं। सो इस टाइम ये बहुत बेहतरीन टाइम है उन सभी से पूछना जो किसी का उनका जान पहचान में कोई जॉब लॉस हुआ, तो आपको उसका नंबर दे, आप उनके साथ कनेक्ट करके उनको हेल्प कर सकें। I tell you, if you keep on calling for people and ask them to give name, within 3 days, you will be busy
the most busiest person to respond to all this call. You see, that is what happened. That is what some of my leader so responded to this, and then yeah, to cut the story short, there's a I'm going to talk about these two leaders, what happened during the COVID, that their business grow so much. Okay, one is already a crown ambassador because her name is Zaitun, no? CA Zaitun, crown ambassador Zaitun. Okay, so she is in my group. Okay, during the COVID, suddenly she changed from offline business into an online business because she have a daughter who is good in IT. So both mother and daughter start doing online because they cannot move about freely. So they start doing killing business online. And I tell you, during the COVID, their business grow. The number of recruitment increased. The sale increased by 35% during the COVID. Okay, so you just explain. ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अगर आपका फ्रेंड रिलेटिव को एवरीडे कॉल करेंगे तो उनके पास नंबर पूछेंगे तो आपके पास बहुत नंबर आ जाएगा, आप बहुत बिजी हो जाएंगे। और ये लॉकडाउन के टाइम मैं कुछ दो स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। मेरा एक क्राउन एम्बेसडर जिन्होंने ऑफलाइन से बिजनेस को ऑनलाइन में लेके आया, उनका एक रिक्रूटमेंट ग्रोथ सब कुछ ज्यादा हो गया, 35% का बिजनेस भी ज्यादा हो गया। Okay, and then there's another one. Okay, when the COVID-19 start, this member, this distributor in my group, he is only a diamond manager. When the COVID-19 started, okay, his name is Tajuddin. Okay, he live in the southern of the peninsula Malaysia. So just now is in the north. Okay, so he was only a diamond manager. So he know a little bit of online, but he doesn't like so much of. Maybe he's not good like me. Also, I love to do offline. I just know a little bit on online, but he is good in doing offline. So what he did is that during the COVID-19, Malaysian government allow anything concerning with farming is doesn't lock down. The farm is not locked down. So that means there's come an idea that Keling have a product, a fertilizer, which is involved in farming. Okay, in the farming industry. So he go to the police station and get a letter telling that he is supplying the fertilizer into the farm and he's this and that, and he got a letter and he got a pass to travel, to cross the province by doing fertilizer. So this Tajuddin, when the lockdown started in 2020, he was a diamond manager. And end of 2020, he was promoted to crown manager just by focusing on one single product, that is fertilizer. Okay, and he hit very hard. And in May, in the month of May this year, he was promoted into crown ambassador during the lockdown period. So my friend, so how to use the lockdown? You see, this is the best time. Change your mindset. This is the best opportunity because you don't have to run around to do the sale. Your handphone can bring you so much sale and so much money and so much contact you can do. Okay, you can explain that. So during this lockdown,
मेरा सेकंड जो एक पार्टनर है उनका रैंक पे था डायमंड मैनेजर 2020 बिगिनिंग में, और उस टाइम मलेशिया गवर्नमेंट में अनाउंस किया एग्रीकल्चर जो फार्मिंग के लिए जो है उसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, फार्मिंग के कोई लॉकडाउन नहीं है। तो उस टाइम मेरा वो डायमंड मैनेजर उनका सोच था, तो ये जो हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उससे हम लोग मार्केट को क्रैक कर सकते हैं। सो चैलेंज को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। देन उस टाइम उन्होंने पेपर्स निकाला और बहुत हार्ड वर्क किया, और एंड ऑफ द 2020 उनका रैंक हो गया क्राउन मैनेजर। नॉट ओनली दैट, आफ्टर 3 मंथ देन अगेन 2021 मई में उन्होंने अगेन क्रैक किया क्राउन एम्बेसडर। सो जस्ट चेंज योर माइंडसेट, आपका माइंडसेट मानसिकता को चेंज कीजिए और एक ग्रो कीजिए। ये लॉकडाउन सबसे बेहतरीन टाइम है, आपका घर में आपका मोबाइल से भी आप ग्रो कर सकते हैं ये टाइम पे। Okay, so I can talk more about lockdown, but our time is limited, so make sure I want to cover all. Okay, so that is all. Okay, from these two story. Okay, from these two story, I think everyone can already get some idea. So how important is it for you to see a negative, you got to change to positive. That's all. That is all. Once your mind is set to the positive mode, everything will become positive. So for me, nothing is negative. Nothing. I don't like to even to think negative. So keep on positive thinking, keep moving forward, anything happen for a reason, change into opportunity. Okay, so that is important message to everyone. So ये दो स्टोरी से आप लोगों के पास क्लियर हो गया है। सो हर सिचुएशन को आप पॉजिटिव सिचुएशन में बदल सकते हैं, आपका पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। मैं नेगेटिव एकदम पसंद नहीं करता हूँ, नेगेटिव सोचता भी नहीं हूँ, नेगेटिव सुनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, हर चीज में, मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचता हूँ। सो पॉजिटिव सोचने से ही जिंदगी चेंज होता है। Okay, let's go to question number 4. Question number 4, yes sir. Sir, we want to the key secret now, secret formula, sir. Key secret of your huge success. Say again. Sir, key secret of your huge success. Secret of your huge success. The key secret of my new success. Yes. Okay. Yes, sir. I thought that one after the question number 4, I want to share that, but it's okay. Since you asked, so I don't want to forget about the question. Okay. Actually, well, I hope everyone can listen this properly. Okay. There's a key to success, but I don't have secret. So I'm going to tell it, okay? I don't like to keep secret of success. So my success, I want to share to everyone, okay? So, you see, some people, they do all those secret formula that is very difficult for people to imitate or people to copy. So I simplify my formula, okay? You only do 2 things, okay? So that is my secret, okay? That is my secret. And now it's not going to be a secret because I'm going to tell you, okay? Listen to story and tell story. Listen to story, tell story. But, okay, why I say listen to story? Okay, when you want to listen to story, there's so many titles of story. So some title, leadership seminar. So when you attend the leadership seminar, you are attending someone telling the story about leadership. What you do inside the hall is actually listening to story. There will be a super leader or whatever leader, you call it, train the trainer, train the presenter, road to crown ambassador, whatever training, motivation or whatever, what you are doing is that you are attending to someone's story. I simplify it, make it easy. So one of the key
to become successful, you must always listen to story. And this is the kind of story. Okay? What you are doing today, all the participants, what is everyone is doing? All of you are attending to a story. So I am telling today I am telling the story and you are listening to the story. And one day, not to say one day, tomorrow or tonight, from the story that you listen to me, you have an idea what to tell the story. You see? So you listen to story and you tell story. You listen to story, you tell story. When you are out of story to tell, what are you going to do? Go back and listen to a new story. Keep on listening to the new story so that you can get a new idea for you to tell the story. You keep on doing this until telling story become your habit. Telling story become your fun. When that time happen, when telling story, you feel so good. When telling story, you feel so fun. That time, you are already a successful person. You are already a successful person. फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक, वेरी सिंपल तरीका। उन्होंने बताया सीक्रेट कुछ नहीं है। आज के बाद तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा क्योंकि मैं ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सीक्रेट क्या है? दो सीक्रेट है। एक लिसनिंग, स्टोरी सुनना है, और स्टोरी दूसरों को बोलना है। स्टोरी सुनना है, हम लोग किसी भी ट्रेनिंग पे हम लोग जो अटेंड करते हैं, हर ट्रेनिंग पे क्या होता है, किसी ना किसी का स्टोरी सुनते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग में एक लीडर का स्टोरी सुनते हैं, हर ट्रेनिंग में किसी ना किसी का एक स्टोरी जर्नी हम लोग सुनते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। आज जैसे आप लोग मेरा स्टोरी सुनने के लिए आए, इस स्टोरी से आप सीखेंगे। सो ये स्टोरी सुनना है, और ये स्टोरी आप आज ही रात या टुमारो किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो ऐसे ही स्टोरी सुनना और स्टोरी शेयर करना, स्टोरी सुनना, स्टोरी शेयर करना, ये रेगुलर आपका होना चाहिए। करते करते एक टाइम होगा, आपको स्टोरी सुनना और स्टोरी शेयर करना आदत हो जाएगा। आपके लिए बहुत फन हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। जब ये चीज हो जाएगा, तब देखिएगा आप ऑलरेडी खुद भी एक सक्सेसफुल आप हो गए। थैंक यू सर, बहुत सिंपल एंड पावरफुल सीक्रेट। So you once you become enjoy telling story, you are already a successful person. So do it until you enjoy. I know when you are starting telling story, you feel a bit tense, okay? Because you are not good. Because you are under training, you know? You are in the training of telling story. Keep on telling. Practice it. Practice with your children. Practice with your wife. Tell story. Anything that you learn, anything that you listen, a good story, go back and practice. The wife practice to tell the story to the husband. Husband practice telling the story about chlorophyll to the wife. So practice make perfect. So once everything is perfect, then when you tell story, people will listen you like that. You see? So that is the time. That is the time money will keep on flowing from your story. Great. So yeah. So इस तरह आप लोग स्टोरी बोलते रहिए, स्टोरी सुनते रहिए, स्टोरी बोलते रहिए, और इसका प्रैक्टिस जारी रखिए। जब भी कोई भी स्टोरी आपको सुनेंगे, किसी प्रोडक्ट की स्टोरी, किसी भी स्टोरी आप सुनेंगे, इस स्टोरी को बोलना प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। आपका घर में जाके हस्बैंड वाइफ को या बच्चे को, हर किसी को आप स्टोरी शेयर करना, सुनना और स्टोरी शेयर करना, ये प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप ये स्टोरी शेयर करना आप एंजॉय नहीं कर रहे। इनिशियली ये आपका ट्रेनिंग है, तो इसमें आपको उतना अच्छा नहीं होगा, बट प्रैक्टिस करते करते एक टाइम आएगा आप जब एंजॉय करना चालू करेंगे, और जब आप ये स्टोरी टेलिंग आप एंजॉय करना चालू करेंगे, तब मनी फ्लो होना चालू हो जाएगा। ग्रेट सर, एक्सेलेंट एंड वेरी सिंपल एंड पावरफुल सीक्रेट। आज जो आपने रिवील किया, very easy to follow. Very easy to follow, duplicable. Yes, sir. Very simple and easily duplicable, sir. Now, the final question, sir. Okay. So, final question number 4.
Yes, sir. Final question. Okay. Final question, sir. Your single line advice to upcoming leaders. Oh, okay, good. I love the upcoming leader. Okay. Actually, first of all, whether you are new or you are already sometime in business, so you got to really, really understand why you are in this business. Okay. So if you don't understand why you are, that means you don't have purpose. You see, first you got to have the purpose. Why you are in, you ask yourself. Okay, all the new members, all the members today, those who are listening. Okay, now let's start new. Okay, today you listen to me. So whatever it is, I don't want to know your history, whether you are lazy or you are active. But now today, okay. So let's do something right. You got to know why you joined Kelly. Second, you ask yourself a question. What do you want to achieve in Kelly? You translate that first. So आज जितने सारे लोग ये यहाँ पे है, इनमें से बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर है. मैं आपका पास्ट जानना नहीं चाहता हूँ, मैं आपका अतीत जानना नहीं चाहता हूँ, बट आप पहले आज एक क्वेश्चन पूछिए, क्यों इसका आंसर, क्यों आप ये बिजनेस को ज्वाइन किया, क्यों आप ये बिजनेस को करना चाहते हैं, और सेकंड, आप इस बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हैं. Okay. So once you already decide what you want, okay, hold on to it. Hold on to it and give yourself your best shot. Give yourself, how do I say, best shot? I think you can explain in Tamil. Give yourself a best shot, whatever it takes. Whatever it takes. So I want to flash back a little bit now. When I can see the potential in Kelly, when I can see my future in Kelly, I give myself 5 years. I want to work myself all out for 5 years. No matter what happened, don't quit. Don't jump here and there. I remember one thing, because this is very important. This happened everywhere. This happened in India, this happened in Malaysia, this happened in Philippines, and all over the world of multi-level marketing. We call it the grasshopper syndrome. I think you can translate. The grasshopper syndrome. So let me translate, sir. You translate first. Yes, sir. So translate. Yes, sir. So जब आपने डिसाइड कर लिया क्यों ये बिजनेस करना है और क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद एकदम आपका 100% आपको देना है उस गोल के लिए. आपने जो गोल डिसाइड किया उस गोल के लिए, मैंने भी दिया था मेरा 100%. 5 इयर्स के लिए एकदम माइंड सेट करने के देना है. देखिए, उस तरह होना नहीं है जो ग्रेसहॉपर इधर उधर भटकता है. वो इंडिया में भी है, मलेशिया में भी है, फिलीपींस में भी है, हर कंट्री में है मल्टी लेवल मार्केटिंग में. कुछ लोग रहते हैं ग्रेसहॉपर, आज इधर कल उधर जाते हैं. प्लीज सर. Please. I hope no one inside here listening to me will become a grasshopper. Okay? I don't like grasshopper. तो मेरे को लगता है आप लोग, अगर मैं ग्रेसहॉपर होता तो आज कोई मेरे को सुन नहीं पाते, क्योंकि मैं तो ये नहीं रहता. In Thailand and Cambodia, people catch grasshopper and fry it and eat it. So don't become a grasshopper. You end up in a frying pan and people will eat you. Okay? थाईलैंड एंड कंबोडिया में ग्रासहॉपर को फ्राई करके लोग खा लेता है, तो ग्रासहॉपर मत बनिए. Okay, so this is very important. Okay, don't become a grasshopper syndrome. So give yourself, why I say 5 years,
because you got to be fair to yourself. Okay, you must be fair to yourself, because this is a business of a career building business. You are going to build your career. Okay, how can you build a career in 5 months? How come you build a career in 1 year? But if you want to see something, if you want to see something good, and you want to see success, give yourself 5 years and work all out. That is what I challenge myself. I say I want to work all out for 5 years, and after that, I want to go easy. Not to say retire, okay? And after the 5 years, I should go easy. Money keep coming in, then I can continue. Like if the plane, so the most power is during the takeoff. So while it's already in the air, we call it cruising. So after 5 years, I'm going to cruise. I'm cruising. Or you can go for a cruise, or you can go for holiday, but your business is, you monitor your business. That is what I'm doing now. So I'm cruising, but I don't stop. If I shut down the engine, the plane will go down. so just cruise. You don't use so much power, because everything is set up in the first 5 years. So this is what. So you got to set your mind, you got to set your time, and you must not follow the grasshopper syndrome. And I tell you, everyone will be at your destination or will achieve your goal if you work smart, work hard, give an appropriate time. Because 5 years is not too long and it's not too short. 5 years is a reasonable. You are going to build from whoever you are into an entrepreneur. We are not talking about become a businessman. No, entrepreneur, world-class entrepreneur. And just imagine, after that, okay, yeah, maybe next episode, if you invite me, I will tell you my life story. So my lifestyle, okay? So you travel in style. People want freedom. Yes, I want freedom, but not the common freedom. Try to achieve the uncommon freedom. You can translate that. एक्चुअली मैं जो चीज आपको बोलना चाहूंगा इस बिजनेस के लिए 5 इयर्स ये एक फेयर चीज है, क्योंकि आप 5 इयर्स चाहिए. ये 5 इयर्स ना ज्यादा है ना कम है, क्योंकि आपको ये बिजनेस को समझना होगा और इस बिजनेस को आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को बिल्ड करना होगा. सो 5 इयर्स एक फेयर टाइम है. इस बिजनेस के लिए डिसीजन लेना होगा. इन बिटवीन आप ग्रेस ऊपर की तरह क्विट मत कीजिए. बिजनेस को सिंसियरली कीजिए आपका ड्रीम के हिसाब से, और कमिटमेंट के साथ 100% कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में हार्डवर्क कीजिए. मैंने जो किया था मेरा 5 इयर्स, और ये 5 इयर्स में आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप कौन स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेटर नहीं. आप आपका डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली पहुंच जाएंगे. 2 चीज सेट करना है, एक माइंड सेट करना है और दूसरा आपका टाइम सेट करना है इस बिजनेस के लिए. सो मेरे को दूसरा दिन मौका मिलेगा तो मैं मेरा अचीवमेंट के बारे में मैं बताऊंगा. मैं फ्रीडम चाहता था, कोई आम फ्रीडम नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूं. So is it enough or you want some more? One question that I want to ask you. Good evening, Mr. JR. Yes, sir. This is my brother. Yes. Definitely. Yeah. You are going to come second episode. We don't want to give everything. One day everything. We must episode. Then only people will feel very fun. You see. Okay. My question here is, Pranav, Dr. Pranav will translate after you listening to this question. When you see opportunity, when you see the future, definitely you will say, yeah, I'm going to go forward. But for certain people, they can see the future. But for certain people who cannot see the future, they are thinking whether can do or cannot do. What is your advice to them? Maybe in during your career, you see suddenly
I think I don't see future in Kaling. But what made you to I believe this will gone through any networker, anybody, they will go through this kind of syndrome. So Yeah. I want you to see how come suddenly you can see the future back. Okay. Good. Very good question. And I love the question. Okay. Okay. You see, some people say, oh, yeah. Sometimes whether I want the future. Yes. So I want that kind of future. But whether can I achieve or I may not achieve. Okay. So very simple question, very simple answer. Okay. This kind of question, you don't have to answer the question. So I will ask the question. Okay. I will ask back the question. Okay. So now, if you want something and you are not sure whether you can get it or not. So that is some sort like question. Okay. I want it, but if I do, can I get it? Okay. Or will I not get it? So the answer is like this. Yes, what I can say is that if you do, two things may happen. One, you may get it, you may achieve it. Second, you might not achieve it. So now you are worried about, if you do, you are worried about not achieving it. Is that right? Right. Is that right? So now, simple. So I will tell you back. The answer is two. One, you can get. Second, you might not get. But if you try, at least you got 50-50 chances. Maybe get, maybe don't get. But if you don't take action, it's 100% you don't get anything. So make your choice. If me, I give my best shot. Okay? Whatever you don't know, you learn through the 5 years. I learned a lot. When I joined, I also not as knowledgeable as today, but I grow old. I know I'm growing. Yeah, it's 20 years already in Keling. So I'm 20 years older from the day I start. But I'll make sure I grow old by learning something new every day, even though it's a tiny little thing. It adds on to my knowledge, add on to my information. So this is what make me what I am today, because you try. If you say you don't get it, if you want to achieve something in 1 year, you don't get it in 1 year, you only miss the deadline. But if you don't stop, you are not yet, you don't miss the goal. You set the goal to achieve in 1 year. Fair enough. In 1 year, you don't achieve. Keep on. Maybe another 5 months you achieve. So you miss the deadline. There's no harm. I miss a lot of deadline. But I still doesn't miss the goal. That is the most important. Don't miss the goal. You miss the deadline, doesn't matter. A lot of people miss deadline, but there are some people, when they miss the deadline, they give up. This is the most, I tell you, you lose so much. You spend the time, just a little bit more, you give up. So never give up. So I inspire my people, never give up. So I don't know. I'm not a good motivator. So you all can judge me today. I'm not a good motivator. Only I'm a good storyteller. Correct. Okay. I don't want to become popular. I don't want to become,
yeah, I'm a humble person. Okay, so you live humble. That's the best. Okay, let people talk about you. Oh, how come he a millionaire? How come he is so humble? Hey, nothing wrong to become humble. Be a humble millionaire. People talk much better because people expect millionaire to be snobbish, but you are different. So live it easy. I want to live an easy life. Be a low profile person with a high performance. So that is okay. I know there's no more question. I still remember Dr. No, we will continue the next month. Okay. So before I end today, let me translate. Let me translate, sir. After that, your closing presentation. Okay. Good. So our honorable director sir asked very fantastic question. तो हम लोग का क्या होता है, कभी-कभी सिचुएशन क्या होता है, जो हम लोग कुछ भी जो सोचते हैं ये चीज मेरे लिए होगा क्या नहीं होगा, ये हम लोग जो गोल लगाते हैं हम लोग सोचते हैं गोल मेरे से अचीव होगा क्या नहीं होगा, उस टाइम क्या करना चाहिए. तो आवर ऑनरेबल गेस्ट आज बहुत ही अच्छा आंसर दिया. देखिए आप जब गोल सेट करते हैं तब आपके दो पॉसिबिलिटीज होता है, एक आप अचीव कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते. ये बहुत ही सिंपल है, 50-50 चांस है. और आप अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आपका 100% चांस है आप अचीव नहीं करेंगे. ये तो बहुत ही सिंपल बात है. सो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए. और सेकंड जो चीज बोले, दुनिया में जितने सारे लोग गोल अचीव किया, इवन आवर ग्रेट अचीवर मिस्टर मोहम्मद बिन जाफर, उन्होंने जब अचीव किया जिंदगी में, उनका हर टाइम जो डेडलाइन था, उन्होंने बहुत बार डेडलाइन फेल किया, बट उन्होंने जो चीज मिस नहीं किया, डेडलाइन मिस किया, बट उन्होंने जिंदगी से गोल मिस नहीं किया. हो सकता है आपका जिंदगी में भी डेडलाइन मिस हो गया, बट गोल को मिस नहीं करना चाहिए, गोल को चेस करना चाहिए, तब एक टाइम आएगा आप अचीव कर पाएंगे. और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए 20 साल का तजुर्बा के बारे में बताया. ऐसा नहीं उनका फील्ड एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है, 20 साल की तजुर्बा मींस नॉलेज. उन्होंने एवरीडे नॉलेज एक्वायर किया, एवरीडे कुछ नया सीखा. आज 20 साल एवरीडे नया सीखते सीखते हम लोगों का डायरेक्टर सर का जो लास्ट प्रोग्राम था कंपाउंडिंग इफेक्ट, सो उनका बहुत नॉलेज हो गया, आज बहुत नॉलेजेबल आज हो गया. इसलिए उन्होंने बहुत गोल आज अचीव किया, एक सक्सेसफुल मिलियनर हुआ. और मिलियनर होने का बाद कैसे लाइफस्टाइल होना चाहिए उसके बारे में बोला. मिलियनर होने का बाद लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं एक मिलियनर क्या होगा, अरे मैं मिलियनर बन गया, एटीट्यूड दिखाएगा. बट बहुत ही हम्बल रहना है, लोग आपके बारे में बोलना है, आप बहुत ही हम्बल, तब जाके आप अपना रियल सक्सेस एंजॉय कर पाएंगे. सो थैंक यू सर. आपका लास्ट और भी सर कुछ बोलना चाहते हैं सर, प्लीज नेक्स्ट. Yeah, you are we going to end? No. Yes, You sir. can you conclude what you want to say. Okay. Next month we go Okay. episode 2. Sure. Okay. So okay, let's wind up. Okay. Right. That's a motto, no? So yeah, I have a motto, no, for me. And then how do I bring up? Not to say I bring up, how I inspire my people is that because yeah, I can put in 2 sentences. Okay, 2 sentences. Okay, so whatever it is, for all, especially to all the Indian Indian leader in India. Okay, so if you are scared to be poor, then you will never become rich. And if you are too scared of failure, you will never succeed. So that's all, folks. So thank you very much for having me, and thank you very much for becoming a good listener. And thank you, Mr. Jaga, for inviting me, and thank you, Doc, because yeah, we were talking for a few days. We are chatting about today's event, and so my sharing today, I hope it will inspire, some of you, if not all of you. So some of you to inspire. Remember, stay away from the grasshopper syndrome. Okay, try to avoid to become a grasshopper syndrome, because soon your leg
you were injured your leg by jumping too much. Okay, so so that's all. Yeah, I'm very thankful and I'm very glad to spend a Saturday evening with everyone in Zoom. I don't know how many people. It went to 240 people. Now, Okay. because the time is getting long, it's now 2:09. So it's a very good session, 240 people. It's Okay, very okay. good. Majority Okay, of them thank you said very 1 much. year. Hey, I see my brother, Dr. Rupa Dr. masuk Rupa, in. he is listening. He is listening Hey. your talk. Why must you invite him? I don't want him to be in the Zoom. Hey, thank you, Doc. Okay, Dr. okay, Rupa, All right. thank you so much. Maybe Power, power. next month he will ask you question. Hey, I'm so glad because what you see me today is because of for more than 15 years I'm taking his Ayurveda, adding on. Maybe Mr. JR, you can give me some- Mr. JR, he's talking. He's talking already. Mr. JR, namaste from Yeah, Mumbai. namaste. Just to tell all the list, जब सबको मैं बताता हूँ, JR सर को मैं मलेशिया में नहीं मिलता, पर उनको इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, कैम्बोडिया में मिलता हूँ, और इनसे सीख लो. ये ऐसा गुरु है जिसको गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए. बहुत ही बढ़िया आदमी है, इतना पैसे वाला है और नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाता है, और मैं तो इससे मुग्ध हो गया हूँ ये आदमी से, और मुझे बहुत पसंद है, और इस्लामिक है फिर भी मिक्सिंग बहुत है, नो प्रॉब्लम, और जैसा देश वैसा भेष. So Mr. JR, I only have good things to say about you, and Mr. Jega is doing fantastic work. He's working very closely with the leaders, with the manufacturers, and I'm so glad he called you. So, okay, Jega sir, please take over. Okay, thank you very much, Dr. Rupam. Don't worry, Mr. JR. We will continue episode 2 next month. Okay, take care. Okay, Yeah, Pranav, bye. take it over. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech and for your tips. Definitely, we'll follow your speech, and very soon there will a lot of leader will be successful India. So आज सर ने जो लास्ट कंक्लूजन में बोला, बहुत ही बेहतरीन चीज बोला. आप अगर आपके अंदर फियर है, मैं गरीब होने का अगर फियर है, तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते. अगर आपको फेलियर होने का फियर है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए. और सिंपल स्टोरी उन्होंने बताया, स्टोरी लिसन मोर स्टोरी और शेयर मोर स्टोरी. बहुत ही सिंपल अनोखा चीज बोला. और एक चीज है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में क्विट मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप क्विट करने के लिए सोचते, आप लॉजिकली साइंटिफिकली यू आर राइट, बट प्रैक्टिकली यू आर टोटली रॉन्ग. क्योंकि पूरी दुनिया में आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ जिसका माइंड में क्विट करने का आदत है. सो सक्सेसफुल हो जाइए, फॉलो कीजिए सक्सेसफुल लीडर को. हम लोग नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली और भी सक्सेसफुल लोगों के साथ आएंगे. उसका पहले उनका एक वीडियो, सर उनका वीडियो हम देख सकते हैं? यस, सो प्लीज. सो हम लोग एक स्पेशल वीडियो देखेंगे मिस्टर जेवर का. जस्ट 470 एकड़ की प्रॉपर्टी, 470 एकड़ लैंड है, 100% गेलिंग पानी. जेवर के साथ बहुत सारे प्रॉपर्टी है, उनका 14 विलास है, एक रिसोर्ट है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी. और ये देखिए उनका 470 एकड़ लैंड.